Okay, welcome back, dear students. We were discussing about the life and life processes, what living organisms were. So, we have discussed already what were the two basic criteria for something to be alive. Some more informations about the living organisms here. Living organisms are of two types, which are based on unicellular living organisms made up of single cell, made up of single cells. Okay, like we have example amoeba, paramecium and euglena here. Okay, you learn these multicellular organisms which are made up of large number of cells, made of larger number of cells. And body is in tissue level, organs and organ system level. Okay, like we have all plants and animals there. So in this case we are coming here for first topic, that was nutrition. What is nutrition? The process to intake what nutrients in the form of food. Okay, right. What these nutrients are? Nutrients are the essential elements required by the body of living organisms. To obtain energy, for repair of body tissues, and for good health. Okay, right. So some of these essential nutrients in plants are NPK, you know very well, nitrogen, phosphorus and potassium, carbon dioxide gas. In these one, the carbon and oxygen, two nutrients, and oxygen gas also, hydrogen and oxygen in the form of water, these plants require in larger quantity. So these are macronutrients. And micronutrients which are required in essence very less quantity, copper, zinc, sodium, etc. ऐसे और भी हैं बहुत सारे. Okay, so essential nutrients in human or components of a balanced diet of human body which we needs. So what is this? First, energy giving substances. We know very well that number one is carbohydrate. Second is fats. Bodybuilder substances, these are proteins. Carbohydrates we get from grains, rice, etc. Wheat, etc. Fats, butter, milk, okay, oils, etc. Correct. Proteins we receive from milk, meat, fish, etc. Right. Okay, nutrients which provide us healthy body, they are minerals and vitamins. Okay, these are required by the body. And to maintain the temperature, to help the removal of urinary waste, we require water. Okay, to avoid constipation, we require some fibrous foods. Like in simple language, we know that salad which we eat
fibrous food means with cellulose, जो कि हमारी बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए फाइबरस फूड भी खाना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ फाइबरस फूड. These 7 components which our body require. Okay, so next topic in this case is some more important terms actually before starting that basic topics of the chapter. First we will discuss diffusion. What is diffusion? Diffusion is the process of intermixing or movement of substances from higher concentration to lower concentration. हमने 9th क्लास में पढ़ा है इसको ठीक से, है ना, सारी चीज़ें, एग्जाम्पल्स आपको याद होंगी. इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन. सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is required for this. Okay, osmosis क्या है? Osmosis is the process of movement of solvents like water from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. Semi-permeable means जिसमें से selectively कुछ substances इधर उधर जा सकते हो. Semi-permeable membrane is called osmosis. हमारे पास बहुत टाइप के osmosis हैं, जिसमें से इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बाद में फिर, लेकिन हमारे पास 2 ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. एंडोस्मोसिस, movement of water into the cell from outside, so that is called endosmosis. Okay, right. Next is exosmosis, movement of water from inner contents of the cell to inner contents of a cell to the outer solution is called exosmosis. Okay, सी हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के लिए 3 टाइप के सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी अलग अलग जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा. पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें क्या होता है, ये एक सेल थी हमारे पास, इसके अंदर से वाटर जो है वो बाहर निकल गया. मतलब रीजन समझिए बाहर कैसे निकल गया. ये जो बाहर सॉल्यूशन था हमारे पास,
इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, है ना. द सॉल्यूशन इन विच concentration of water is less than the inner content of cell. सो इसका मतलब जब सेल को हम उसके अंदर डालेंगे सो वाटर विल मूव आउट. इसको हम कौन सा बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके. हाइपोटोनिक क्या होता है, इसके अंदर जब हम किसी सेल को रखेंगे तो ये कुछ ऐसे से देखो फूल जाएगी, बिकॉज वाटर इज मूविंग इनटू द सेल, है ना. अब इनटू द सेल क्यों मूव किया भाई, बिकॉज इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थी वो पहले से कम थी, बाहर ज़्यादा थी. सो द सॉल्यूशन इन विच concentration of water is greater than the inner contents of cell. Okay. So water अंदर की तरफ मूव करेगा from higher to lower concentration. आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल जिस फॉर्म में होती है वो उसी फॉर्म में रह जाती है, ना तो वाटर अंदर मूव करता है ना ही बाहर मूव करता है. ये क्यों होता है, बिकॉज अंदर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन और बाहर दोनों सेम रहती है. द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन इज सेम एज द concentration of water inside the cell, है ना, inside the cell. Okay, this is what hypertonic solution, and this is isotonic solution. Okay. Right, dear students, this was the revision of basic concepts which we require in this chapter later stage. So first of all we have discussed those topics to revise things. Right, we will discuss the next topic in next video. Thank you very much.